Hello student, welcome to you all in BioPoint. In today's segment we discuss about accessory excretory organ. In previous lectures we already discussed about human excretory system, how urine formation take place in kidney, and in previous segment we also discussed about concentration of urine, how concentration of urine take place in human being. Now, along with kidney, other organs also participate in excretion, yet they perform other major functions like liver, skin, and most important lungs. Clear? So, in today's segment we discuss about accessory excretory organ. Why these organs are said to be accessory? Because these organs are associated with other major functions like skin, play major role in protection, yet it also participate in excretion. And second we discuss about ornithine cycle, which is the most important aspect for NET point of view. तो इसमें हम थोड़ा सा NET स्पेशल करेंगे, लेकिन मेजर आपके सिलेबस में है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है. ह्यूमन की बात करें तो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी इज किडनी दैट प्ले वाइटल रोल इन एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज यूरिया. दैट्स वाई बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ यूरियोटेलिक animal because we excrete major nitrogenous waste in the form of urea. Now what are accessory excretory organ and these excretory organs क्या क्या चीज़ें excrete करती हैं. तो first of all we discuss about major excretory organ. We already discussed major excretory organ in human is kidney, a pair of kidney. Accessory एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एसेसरी मीन्स जो इनके साथ ही एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करती हैं लेकिन कोई मेजर रोल नहीं है इनका, अदर रोल प्ले करती हैं ये हमारी बॉडी में. एंड दीज इंक्लूड मेनली लिवर, स्किन एंड लंग्स. क्लियर? तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट स्किन. स्किन आपको पता ही है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज मेजर फंक्शन ऑफ स्किन इज हियर. Major function of skin protection or thermoregulation via sweating, perspiration. Thermoregulation via sweating or perspiration. But along with major function, skin also associated with excretion. How skin participate in excretion? The skin consists of major two type of glands, sweat gland and oil gland. So first of all here I discuss the skin consists of sudoriferous gland which is also said to be sweat gland. नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, जो स्वेट सिक्रीट करती है एंड अलॉन्ग विथ स्वेट सम अनवांटेड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आर एलिमिनेटेड आउटसाइड. तो दिस सुडोरीफेरस ग्लैंड मेजर रोल इज थर्मोरेगुलेशन. स्वेटिंग से हम कूलिंग, बहुत एक्स्ट्रा हीट बॉडी का डिस्चार्ज कर देते हैं, तो इट इज एसोसिएटेड विथ कूलिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी. दैट्स वाई इट मेजर एसोसिएटेड विथ थर्मोरेगुलेशन. अलॉन्ग विथ थर्मोरेगुलेशन इट ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन excretion also. So this sudoriferous gland secrete sweat and this sweat mainly eliminate, it consists of salt like sodium chloride. Along with salt this also release certain amount of urea, Major urea is eliminated along with urine, but certain amount of urea even excreted along with sweat. And third is lactic acid. Lactic acid you already studied in lower class when we undergo strenuous physical exercise or strenuous physical activity हम करते हैं, तो due to anaerobic breakdown the pyruvic acid converted into lactic acid that lead to muscle spasm. तो small amount of lactic acid even excreted along with sweat, but it normally not excreted along with sweat, it only occur during strenuous physical activity. तो lactic acid is eliminated or excreted only during strenuous
फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल एक्सरसाइज. क्लियर? नाउ द स्किन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अनदर ग्लैंड दैट इज sebaceous gland. Sebaceous gland. Sebum stand for oil gland. Sebaceous gland or simply it is said to be oil glands. This is simplified branch gland, whereas this sweat gland is simple tubular gland. Again ये NEET का important question. Sweat gland are simple tubular gland, whereas oil glands are simple branched gland. Branching structure होते हैं and the sebaceous gland is located throughout the skin. Located throughout the skin, out the skin, generally bottom to hair follicles. जहाँ से हेयर अराइज होते हैं उसके बॉटम में जनरली इनकी सिचुएशन होती है. तो दिस sebaceous gland इज मेजर एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ ऑयल. ऑयल देखते हो आप फेस पे, अदर एरिया में ऑयली सिक्रीशन देखा होगा. तो अलोंग विथ ऑयल लिपिड्स आर एक्सक्रीटेड. अनवांटेड जो हैं, जो हमारी बॉडी में यूज नहीं हो पाए, दैट फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल इज एलिमिनेटेड अलोंग विथ ऑयल. तो नाउ दिस सीबम और sebum help in excretion of unwanted lipids, include fatty acids, waxes, sterol, etc. along with cholesterol also. क्लियर? तो जो हम मेरी मेजर स्किन की बात करें तो स्किन मेजर एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन. इट प्रोवाइड फिजिकल बैरियर और इम्यूनिटी टू द बॉडी, बट अलोंग विथ मेजर फंक्शन इट ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन एक्सक्रीशन. नाउ स्किन के अलावा और कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन में मेजर रोल प्ले करते हैं? तो दे इंक्लूड लंग्स और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिवर. लिवर जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, विच इज ऑल्सो सेड टू बी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ द बॉडी. तो नाउ कम ओवर द सेकेंड एसेसरी ग्लैंड विच इंक्लूड लंग्स. A pair of lungs are present in human body, that is spongy organ. We already discussed in breathing and respiration. तो lungs major associated with breathing. Major function of lungs are breathing, which include inhalation and exhalation. Breathing is a physical phenomena. We already discussed in chapter number 17. Lungs associated with inhalation and exhalation, and through exhalation we eliminated large amount of CO2 and water vapor. That's why this lungs associated with, why it is said to be excretory organ. यदि आपसे पूछ लिया जाए तो it is associated with elimination of CO2 and water vapor along with exhaled air. जो हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उसके साथ साथ हम CO2 एंड वाटर वेपर एलिमिनेट करते हैं. तो बॉडी से अनवांटेड CO2 को निकालने में मेजर रोल प्ले करती है लंग्स. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एंड अप्रॉक्सीमेट 200 ग्राम CO2 is eliminated per minute. This is the generalized data. Now the third major accessory excretory organ is liver. The major role of liver, it behave as a metabolic center of the body, that it participate in metabolism of carbohydrate, metabolism of fat and metabolism of protein. Along with metabolism, it behave as a detoxification center. Major function is meta-regulation of
metabolism of carbohydrate. In this segment we doesn't discuss the major function of these organ, we just focus over excretory organ. Liver play very vital role in human body, but here I just discuss the excretory function of liver. Regulation of metabolism of carbohydrate and protein, etc. But liver help in excretion of certain substance, and it is the major site, and that's why it is said to be detoxification center. Why it is said to be detoxification center of the body? Because it help in conversion of toxic substance into non-toxic form. We already discussed in mode of excretion there are three excretory substances, that is ammonia, urea and uric acid. The most toxic substance is ammonia, that is the byproduct of protein metabolism, and this ammonia is highly toxic. It eventually lead to death of the human. That's why this toxic substance is simultaneously transformed into non-toxic substance, that is urea. That's why it is said to be detoxification center. How it behaves as a detoxification center? Because it convert toxic substance into non-toxic form. For example, write down, it convert highly toxic ammonia into less toxic urea via ornithine cycle. So what is the place where urea is formed? The urea is formed in mitochondria of liver cell. Along with mitochondria, urea is also formed in certain kidney cell and brain cell in minor amount, but the major urea formation take place in liver cell. That's why this behaves as a detoxification center, and it also help in production of hippuric acid, that is the zero threshold substance that is eliminated completely along with urine. तो now कि क्या करती है, यदि हम कहें कि इट इज़ हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिया रेदर देन एलिमिनेशन ऑफ यूरिया. यूरिया इज मेजर एलिमिनेटेड अलॉन्ग विथ यूरिन एंड माइनर अमाउंट ऑफ यूरिया इज एलिमिनेटेड अलॉन्ग विथ स्वेट. क्लियर? तो नाउ राइट डाउन द एसेसरी एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लिवर. फर्स्ट एक्सक्रीटरी फंक्शन, इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिया which is eventually excreted along with urine and in little amount via sweat. Clear? Second function, that is in chapter body fluid and circulation we discuss about hemoglobin is breakdown into bile pigments and bile salts, that HB breakdown product breakdown into bilirubin, biliverdin and urochrome. This urochrome provide peculiar straw pale yellow color to the human urine. This bilirubin and biliverdin, that is said to be bile pigment, that is eliminated along with fecal matter. So this bilirubin and biliverdin is eliminated via fecal matter, that is through digestive system, whereas urochrome is eliminated or excreted via urine. It also provide a peculiar color to the urine. And third, it help in excretion of certain drugs, स्टेरॉइड्स, या आप सिंपली कहूँ तो इट कन्वर्ट टॉक्सिक ड्रग्स स्टेरॉइड्स इनटू नॉन टॉक्सिक पर. हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, etc.
That's why these organs are said to be accessory organ. So we discuss about three accessory organs. First is skin. Skin consists of sebaceous and sudoriferous gland, whereas second one, that is sudoriferous and sebaceous gland. Sudoriferous gland release sweat that help in major elimination of water along with certain salts. Sebaceous gland, that is oil gland, help in elimination of mainly unwanted lipid. Now the second accessory organ, that is lungs, which help in major elimination or excretion or elimination of CO2 rather than excretion. Third, liver. Liver is mainly said to be detoxification center. It converts all toxic substance into non-toxic form that is not lethal to our body. यदि मैं सिंपली यदि आपको बताऊं कि सभी के सभी डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लिवर सेल. क्लियर? इफ एनी एंजाइम्स गेट फेल्ड देन दीज टॉक्सिक सब्सटेंस स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन ब्रेन. सपोज यदि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो यदि थोड़ी देर के लिए भी अमोनिया हमारी बॉडी में रह जाए तो इट लीड टू कोमा एंड अल्टीमेट डेथ. ब्रेन सेल स्टॉप फंक्शनिंग. यदि थोड़ा सा भी हमारे ब्लड में अमोनिया का लेवल माइन्यूट कुछ टाइम के लिए भी बढ़ता है, यदि कन्वर्ट नहीं हो पाता यूरिया में, तो आप सोच सकते हैं कि लिवर इज द मेजर ऑर्गन विच हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म. नाउ अभी आपने देखा कि जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है इट कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया. तो हाउ अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया? नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑर्निथिन साइकिल. Now last we discuss about ornithine cycle and that take place in liver cell. Liver is the accessory excretory organ that convert toxic ammonia into urea. And how this ammonia is converted in urea, it involve major 4 steps and that all steps occur in cyclical manner. That's why this cycle is said to be ornithine cycle. Here ornithine behave as a acceptor and that play very major role in production of urea. That's why this cycle is said to be ornithine cycle. And on the basis of discovery it is also said to be Krebs Henselt cycle. इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी Krebs and Henselt cycle. And this cycle discovered in the year 1932 and the all enzymes responsible for the operation of these cycles are located in the mitochondria of liver cell. So what is the major site of this cycle? Major site या simply हम कहें तो it is operated in mitochondria of liver cell. यदि सिंपली कहूँ तो मेजर अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर सेल. मेजर अमाउंट ऑफ यूरिया प्रोड्यूस्ड in liver cell via following ornithine cycle and all enzymes involved in this cycle is present in the mitochondria of liver cell, whereas the minor amount of urea also produced in brain and itself in kidney. क्योंकि मैंने आपको बताया अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक. यदि वो थोड़ी देर के लिए भी ब्रेन सेल में एक्यूमुलेट हो जाए तो इट इज हाईली लीथल एंड लीड टू कोमा स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट. दैट्स व्हाई ब्रेन इवन कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया साइमल्टेनियसली इनटू यूरिया दैट इज लेस टॉक्सिक फॉर्म. नाउ कम ओवर द जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन. वी ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर. Ammonia, 2 molecule of ammonia when combined with 1 molecule of CO2 it finally produced NH2 C double bond O NH2 and this is simply said to be urea. So here this ammonia which is highly toxic form, which is highly toxic, converted into less toxic form. This is the generalized equation, less toxic form. This is the generalized equation of urea formation. But the urea formation in liver cell is a highly complicated process and it requires number of enzymes and it involves major 4 steps.
तो ऑर्निथिन साइकिल ऑपरेटेड इन मेजर 4 steps. First of all, write down the steps ताकि आपको याद रहे. First is formation of carbamyl phosphate. Second is formation of citrulline. And third is formation of arginine. This third step operated in major 2 substep. मतलब the third step formation of arginine involve major 2 substep कह सकते हो आप, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 3 first और 3 second. It is operated in major 2 substeps. And fourth is regeneration of ornithine and production of urea. These are the major 4 steps that play in production of urea, and this is the generalized equation of urea formation, that is 2 molecule of ammonia when combined with 1 molecule of CO2, it ultimately produce urea, and this urea, which is comparatively lesser toxic than ammonia, involve major 4 steps. जो यहाँ पे आपने देखा कि वाई इट इज सेड टू बी ऑर्निथिन साइकिल, बिकॉज जो ऑर्निथिन पार्टिसिपेट कर रहा है यूरिया फॉर्मेशन में, इट again regenerate. What do you mean by regenerate? That participate initially again produce हो रहा है. That's why this cycle is this process is said to be cycle, ornithine cycle. तो सिंप्लीफाई एक बार फिर से रिकैप करा दूं. लिवर इज आर डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर. द ऑल एंजाइम्स which play major role in production of urea is located in mitochondria of liver cell. That's why liver cell is behave as a detoxification center of our body. Major urea is produced in liver cell, along with liver cell in brain cell and as well as in kidney cells. Small or minor amount of urea is produced, and it involves major 4 steps for the production of urea, that is much less toxic as compared to ammonia. Now directly come over the ornithine cycle, that is important for your NEET point of view. तो ornithine cycle किस तरह से मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, फटाफट हम रिकैप करेंगे. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फर्स्ट लीनियर स्टेप आपको दिख रही है. अमोनिया, हियर दिस अमोनिया when combined with CO2, carbon dioxide, in the presence of carbamyl phosphate synthetase enzyme, carbamyl phosphate is produced. Here the first product formed during urea cycle or ornithine cycle is carbamyl phosphate. एंजाइम याद करने का तरीका बेटा, कार्बामाइल फॉस्फेट. तो यहाँ पे एंजाइम क्या है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है किसकी, कार्बामाइल फॉस्फेट. दीज ऑल आर इंटरमीडिएट. जब भी कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है तो देर आर सीरीज ऑफ रिएक्शन विच प्ले in production of major product, that is less toxic product urea. तो बहुत सारे intermediate produced होते हैं. तो first intermediate produced in urea cycle is carbamyl phosphate, and it involve enzyme carbamyl phosphate synthetase. Clear? It is highly endergonic reaction or energy consuming reaction. 2 ATP is utilized to perform this step, and this is the first step of urea cycle. Clear? फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट फ्रॉम अमोनिया एंड CO2. नाउ दिस कार्बामाइल फॉस्फेट इज एक्सेप्टेड बाय ऑर्निथिन. ऑर्निथिन इज द मेजर एक्सेप्टर, कि कोई भी यदि कंपाउंड आ रहा है किसी भी सेल के अंदर तो उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है. तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया में इसको जो एक्सेप्टर है, यहाँ पे एक्सेप्टर कौन बैठे हैं, ऑर्निथिन. दिस ऑर्निथिन एक्सेप्ट कार्बामाइल फॉस्फेट, and in the presence of enzyme ornithine carbamyl transacetylase, it lead to transfer of acetyl group, and simultaneously this ornithine convert into citrulline. Here transacetyl group is transferred to ornithine
acetyl group is transferred to the ornithine and it convert into citrulline. These all are intermediate. अब आप देख रहे हैं कि है कार्बोमाइल फॉस्फेट इज प्रेजेंट, फॉस्फेट, तो यहाँ से एक क्या रिलीज होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड दिस ऑर्निथिन कन्वर्ट इनटू सिट्रुलिन. अगेन दिस सिट्रुलिन इज द इंटरमीडिएट. The second product formed during urea cycle is citrulline because ornithine is already present and this behave as a acceptor. It behave as a acceptor. Here the second product formed during urea cycle is citrulline, hence the second step is formation of citrulline. Now the third step is formation of arginine, and arginine formation involve major two substep. दो सबस्टेप में होती है. तो how this arginine formed in liver cell? Citrulline in the presence of aspartic acid. Here aspartic acid, these all are amino acids. Clear? The aspartic acid is here behave as a NH2 donor, amine donor. आपको यदि बता दूं, अमीनो एसिड कंपोज्ड ऑफ मेनली टू ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप. तो अमीनो ग्रुप डोनर की तरह बिहेव करता है. एंड सिट्रुलिन व्हेन अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड, इट ट्रांसफॉर्म इनटू आर्जिनोसक्सेनिक एसिड. इट कन्वर्ट इनटू आर्जिनोसक्सेनिक एसिड. अगेन एंजाइम कैसे याद करेंगे आप? द प्रोडक्ट इज आर्जिनोसक्सेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सेनिक सिंथेटेज. मतलब जो भी सबस्ट्रेट बन रहा है उसके पीछे आपने क्या लगा दिया? सिंथेटेज. ये सिंप्लीफाइड लर्न करने का तरीका बताऊं मैं. अगेन हियर ATP इज कन्वर्ट इनटू ADP देन AMP. जितनी तेजी से कन्वर्ट होता जाएगा लोअर यूनिट में उतनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी. तो हियर ATP साइमल्टेनियस कन्वर्ट इनटू AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट विथ रिलीज ऑफ टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. I stand for inorganic, P stand for phosphate. तो here two inorganic phosphate are released as soon as ATP is converted into AMP. So now aspartic acid behave as a amino group donor, and when this amino group combined with citrulline with release of one molecule of water, it finally convert into arginosuccinic acid. Clear? तो अभी तक आर्जिनिन बना नहीं है, ये थर्ड स्टेप का सब स्टेप है. दैट्स वाई दिस स्टेप इज सेड टू बी थर्ड का फर्स्ट. यहाँ पे लिख सकते हैं आप, याद करने का तरीका सिंपली. नाउ आर्जिनोसक्सिनिक एसिड फाइनली कन्वर्ट इनटू आर्जिनिन विथ रिलीज ऑफ फ्यूमेरिक एसिड. अब आप कहेंगे कि फ्यूमेरिक एसिड किस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि रेस्ट जितने भी हैं वो तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं, साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूरिया फॉर्मेशन में. तो दिस फ्यूमेरिक एसिड रीजनरेट, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एस्पारेटिक एसिड regeneration take place. This step is said to be regeneration. Regeneration का मतलब this fumaric acid produced during second step में produced हो रहा है, तो ये fumaric acid regenerate करके again क्या बना देता है? aspartic acid. तो this is the third का second sub step है. Third is the major step, उसका second sub step. It convert into arginine. Clear? तो एक बार फिर से रिकैप करेंगे कि कार्बोमाइल फॉस्फेट इज एक्सेप्टेड बाय ऑर्निथिन, it convert into citrulline. That's why it is said to be second step, formation of citrulline. Third step is conversion of citrulline into arginine. But citrulline directly not converted into arginate. It involves major two substeps. First, citrulline is transformed into arginosuccinic acid and then finally convert into arginine. Now this arginine in the presence of water, that's why it is said to be hydrolytic reaction. Here water, in the presence of water, this arginine is breakdown. That's why it is said to be hydrolytic reaction. This molecule get breakdown in the presence of water. Now this arginine, when in the presence of water it break down, it convert into ornithine with release of urea. तो आप क्या देख रहे हैं कि continuously यूरिया बनता जा रहा है cyclical manner में, और this arginine in the presence of enzyme arginase regeneration again. Regeneration का मतलब ornithine दोबारा से क्या हो गया? Regenerate हो गया. Regeneration of ornithine take place because ornithine behave as a here acceptor. So here urea is produced by major four step. First one is formation of carbamyl phosphate. Second is formation of citrulline.
Third is formation of arginine, but arginine is directly not formed directly from citrulline, that's why it involves major two sub-steps. Now this arginine undergo hydrolytic reaction in the presence of water. It regenerate to produce ornithine with major release of urea. In that way urea is produced in cyclical manner, that's why this commonly said to be ornithine cycle or urea cycle, and that cycle major take place in liver. If any enzymes, आपने देखा फर्स्ट एंजाइम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इतने सारे एंजाइम्स प्ले मेजर रोल कर रहे हैं यूरिया फॉर्मेशन में, तो यदि इनमें से एक भी एंजाइम काम करना बंद कर दे तो फाइनल टॉक्सिक अमोनिया हमारा नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सॉरी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एंड इट लीड टू हाईली लिथल कंडीशन और फेटाल कंडीशन इन बॉडी, इवन लीड टू डेथ. क्लियर? तो इन दैट वे यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी. थैंक यू सो मच.